एशिया की पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी है जो आयरन ओर की माइनिंग, प्रोसेसिंग और इस तरह की प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन बनाती है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करती है। नतीजों पर फोकस करते हैं क्योंकि उसकी वजह से आज बहुत तगड़ी गिरावट हमने देखी थी टाटा स्टील के शेयर में। 5% के करीब गिरावट आई थी। दिसंबर तिमाही के नतीजे देखे तो कंपनी के मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी। 9575 करोड़ रुपीस के मुनाफे के मुकाबले 2500 करोड़ का घाटा हुआ है। आय में भी 6% की गिरावट देखी गई है, 57,000 करोड़ पर आई है। मार्जिन 26% से घटकर सीधे 7% ही रह गए। क्यों खराब थे नतीजे? चलते हैं समझते हैं। कंपनी के सीईओ एंड एमडी टीवी नरेंद्रन साहब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर, नंबर्स ऐसे खराब आने की क्या वजह थी? क्यों बॉटम लाइन पर इतना असर पड़ा सर? दो तीन चीज है। एक है कि पिछले साल से आप देखिए तो ये साल में बहुत कुछ चीज हुआ है। एक है कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसके असर है, क्योंकि यूरोप का डिमांड थोड़ा कम हुआ है। यूरोप में कॉस्ट बढ़ गया क्योंकि गैस प्राइसेस हैव गॉन अप, एनर्जी प्राइसेस हैव गॉन अप। दूसरा बात यह है कि पिछले साल में 2022 में चाइना में कोविड का बहुत कंट्रोल था, तो इसीलिए टिल दिसंबर द चाइनीज इकोनॉमी वाज नॉट डूइंग टू वेल, so that also had an impact overall on steel prices. So if you compare to previous year, ये main कारण है. More specifically, if you look at the quarter, performance in the quarter was lower than estimates for two reasons. एक है कि Europe, we had obviously a situation where the prices kept dropping. So almost 160 euros per ton drop in prices between Q3 and Q2. दूसरा बात यह है कि हम लोग का थोड़ा स्टॉक था, क्योंकि we are taking a blast furnace shutdown later in the year, later in this year, तो उसके लिए थोड़ा स्टॉक बिल्डअप था, उस पर हम लोग का एनआरवी लॉस हुआ है। तो उसका so you will see a situation where the coal and the iron ore prices have come down, but our cost per ton has gone up because of the NRV losses, so that's gone up by about 31 euros. So that explains the European operational performance. But the main reason, if you see, is हम लोग का pension funds जो है UK में, uska to de-risk the pension funds, we are giving it to an insurance company. Now most of the funds have got transferred to the insurance company, and when you do that there is an accounting adjustment. जो deferred tax credit हम लोग को मिलते हैं for the surplus of the pension, उसका impact होता है, and that's why it's a non-cash loss which has come in. That's about 1900 to 2000 crores. So big part of the loss is because of this non-tax deferred tax adjustment. ओके, तो दो कारण आपने बताए जिसकी वजह से प्रदर्शन खराब रहा। एक तो ऑफकोर्स यूरोपियन ऑपरेशंस, वहां पर जो एक सबड्यूड एनवायरनमेंट है डिमांड को लेकर, और दूसरा जो डेफर्ड टैक्स पेमेंट की आपने जो बात कही, उसके वजह से ये नंबर ज्यादा खराब दिख रहे हैं। इंडिया बिजनेस सर वो अच्छा दिख रहा है ऑब्वियसली कंपैरेटिवली, अगर हम देखते हैं वहां पर किस तरीके का प्रदर्शन रहा, और रियलाइजेशन जो यूरोप में देखी गई है वो कैसी है, और आगे क्या आउटलुक है सर? तो यूरोप का प्राइसेस आप देखिए तो स्पॉट प्राइसेस हैव स्टेबलाइज्ड, स्पॉट प्राइसेस हैव स्टार्टेड गोइंग अप इन दिस क्वार्टर, पर हम लोग का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होता है। तो लास्ट ईयर का जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स है वो तो खत्म हो गया है, और नया कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम लोग नेगोशिएट किया है ये साल के लिए, दैट स्टार्ट्स इन जनवरी, दैट इज टिपिकली एट अबाउट 200 यूरोस पर टन लोअर देन लास्ट ईयर्स लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस। बट फिर भी जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस है दे आर स्टिल हायर देन टुडे स्पॉट प्राइसेस। सो नॉर्मली इट इज higher than the spot prices, but obviously if I compare to last year ka long term contract or this year ka long term contract, there is a drop. So even this quarter we will see a drop in realizations in Europe, but we are also seeing the costs go down because energy costs have come down, gas costs have come down, coal prices have stabilized. It stopped coming down, but we will not have the NRV losses that we had booked last quarter. So Europe will have a challenging quarter, but the performance should be better than last quarter. चैलेंजिंग क्वार्टर है क्लियरली। तो ऐसा समझा जाए दैट सर जो चैलेंजेस रहेंगे वो रॉ मटेरियल्स को से रिलेटेड है इन Q4 आल्सो? तो आप देखिए तो दोनों यूरोप और इंडिया में रॉ मटेरियल कॉस्ट, कोकिंग कोल, वी हैव हैड अ बेनिफिट ऑफ अबाउट $80 to $90 per ton Q3 compared to Q2. ठीक है। So if you look at Q4 compared to Q3, the benefit will be on consumption basis maybe about $10 to $15 a ton. क्योंकि ये भी हो रहा है कि as China has opened up, steel prices have gone up by about $100 in China. Because of that, we are seeing coking coal prices have also started to go up. तो जो $250 तक आए थे coking coal का प्राइस,
Abhi now it is more than $330, $340. So there is that impact, which will not impact us this quarter. It will impact us in the next quarter, but I see the prices, steel prices also going up as it has already started going up. So Q4 की अगर बात करें सर, it's mostly good in terms of demand आप कह रहे हैं. क्या prices के point of view से कैसा रहेगा सर? Gradual up move हम देखेंगे, किस trajectory में ये आगे बढ़ेगा सर? जरूर. Actually India में आप देखिए तो consumption has continued to be strong even last quarter. Rural economy थोड़ा weak था, पर if you look at overall consumption is strong because automotive demand has been good. Automotive industry is doing well. Construction में जितना हम लोग सोचा था उतना हुआ नहीं, पर उम्मीद है कि आने वाले दिनों में it will get better. Also with this budget focus on infrastructure, the construction activity will continue to grow. तो डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्राइसेस आप देखिए तो इंटरनेशनल प्राइसेस हैव गॉन अप बाय अबाउट $100 इन द लास्ट 4 वीक्स. इंडिया में भी प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू गो अप, has already gone up in January, will I think continue to go up in February and March to reflect international prices as well as to reflect the fact that input costs are going up. सर टाइमलाइन क्या होगी मेगा मर्जर की, उस पर थोड़ा सा हमें अपडेट करिए. कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा और एक एंटिटी, एक स्ट्रॉन्गर एंटिटी बन जाएगी? तो इसका तो टाइम थोड़ा लगेगा क्योंकि वी हैव टू गो थ्रू द NCLT एंड गेट द अप्रूवल्स. तो नॉर्मली टेक्स अ फ्यू मंथ्स. वी हैव ऑलरेडी फॉर मोस्ट ऑफ देम वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड. वी आर इन प्रोग्रेस. When we had started this process last year, we had said that it will probably take about a year. So I think it depends totally on the the NCLT process. But उम्मीद है कि आने वाले in the next few months we should make good progress on this. श्योर. सो कुछ ही महीनों की बात और है जैसा आप बता रहे. क्विकली सर, NINL, आई नो जब से आपने एक्वायर किया है आपको इमीडिएटली वहां पर एक प्रोडक्शन हाइक मिल गई फॉर द कंपनी. तो अब इस वक्त परफॉर्मेंस वहां पर किस तरीके का है? सिनर्जी बेनिफिट्स कैसे दिख रहे हैं? कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है सर ऑन योर बुक्स? Oh, it's very good. In fact, yesterday we had the highest ever production in NINL, which is 3,200 tons. So they are already operating at rated capacity. ये plant almost 3 साल के लिए बंद था. So we had said that within 100 days we will get it started, which we have done. And one by one, all the facilities have been commissioned. Only coke plant जो है that is left, that will get commissioned by July. पर अभी production is the hot metal, the iron, hot metal production is almost 80,000 tons a month, and steel production will also be 70,000-80,000 tons a month by this month, February and March. ओके, तो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है एट NINL. सर क्विकली आपसे जानना चाहेंगे ओवरऑल आउटलुक अगर हम बात करते हैं कंपनी का, FY24 कैसा साल रहेगा फॉर टाटा स्टील, जिस तरह से ग्लोबल सिचुएशन भी है, डोमेस्टिक डिमांड की एक सपोर्ट है और जो वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं? तो आप जो देखा है वो सही है. नेट डेट डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस आप देखिए तो नेट डेट वी हैव केप्ट अंडर कंट्रोल बिकॉज वी एक्सपेक्ट दैट मोर कैश विल बी रिलीज्ड थ्रू द वर्किंग कैपिटल रिलीज. लास्ट ईयर आप देखिए तो लॉट ऑफ मनी वाज स्टक इन वर्किंग कैपिटल बिकॉज ऑफ द राइजिंग कोल प्राइसेस एंड इनपुट कॉस्ट. But we are seeing that working capital release. We had also built up stocks for a major shutdown in Netherlands that will also get released. Overall, if I look at it, the India performance next year certainly should be better than this year because we are seeing the activity back and the prices are also recovering from where it was at its lowest level. दूसरा बात यह है कि अभी export duty नहीं है, तो we have an export option. Last year, for most of last year, we didn't have an export option. So if the international markets are good, we have that also as an option. यूरोप में वी हैव सम चैलेंजेस क्योंकि नेदरलैंड्स में हम लोग का ब्लास्ट फर्नेस का काम चल रहा है नेक्स्ट ईयर फॉर अबाउट 3-4 months. So there will be some sort of impact of that. But like I said, we built up stock so that the sales is not so impacted as production. And UK continues to be challenging. But overall, I think Europe maybe energy costs and gas prices are already settling down. So we are hoping that next year we will continue to recover. ओके, ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए किस तरीके की प्रदर्शन रही और आगे मोर इम्पोर्टेंटली किस तरीके का आउटलुक है फॉर द कंपनी.